नमस्कार आप सबको। आज हम लोग बात करने वाले लव और अरेंज मैरिज के बारे में। दोनों में अंतर देखेंगे, कैसे दो लोगों को एक साथ रह के एक दूसरे को रेस्पेक्ट करके चलना चाहिए। लव मैरिज का अंतर क्या हो सकता है, अरेंज मैरिज पे अंतर क्या है लव मैरिज से, ये सब हम लोग बात करेंगे। तो मैम, लव और अरेंज मैरिज कौन सा, मतलब आपके लिए आप किसको फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहोगे? देखिए, it's not about giving preference. It's both love and arranged marriages are successful. It depends only on two individuals, husband and wife. Okay, how if I'll just tell means two person how they lead their life, and in right way if they lead their life. Now what is right, what is wrong, that is Depends from person to person. बट हाँ, अगर वो अपनी जो शादी का गाड़ी है ना उसको अच्छी तरह से चलाए ना, तो बी इट अरेंज मैरिज बी इट लव मैरिज बोथ विल बिकम सक्सेसफुल। क्योंकि अभी हम लोग ऐसे परसेप्शन नहीं रख सकते कि ओनली लव मैरिजेस आर सक्सेसफुल और ओनली अरेंज मैरिजेस आर सक्सेसफुल। बिकॉज सोसाइटी में अगर हम लोग देखें अपने आसपास, वी कैन सी एवरी वन ऑफ अस, वी कैन सी दैट देयर आर लव मैरिजेस विच आर सक्सेसफुल एंड देयर आर अरेंज मैरिजेस विच आर नॉट सक्सेसफुल एंड वाइस वर्सा। सो अभी जैसा कि बहुत साल पहले लाइक आवर पेरेंट्स और आवर ग्रैंड पेरेंट्स, उस टाइम पे लव मैरिज का कंसेप्ट वेरी रेयर था, इट वाज ऑलवेज अरेंज मैरिज, but this are successful. So now time has changed, people's thinking have changed. So what I think for the main point is again two individuals, their thought process, if both of them somewhere they can connect to each other and they respect each other, then marriages are successful irrespective of love Like or respect is arrange. necessary. Yes, respect is necessary. And I'll just give an example here. We always we always know about Mr. Narayan Murthy, the founder of Infosys. Yes. And his wife, Mrs. Sudha Murthy, she is a social activist. So we have seen their marriage is not directly love, not directly arranged, because as per Sudha Murthy, I have gone through her videos, I've seen in her videos that she knew Narayan Murthy before her marriage. Like she not like once their marriage got fixed, they did not get married the next month. There was quite a time, 3-4 years, I think, probably, I don't remember. So after that, they got married. Okay, so throughout this, even if we go through her life, we came to know that how they supported each other in their career journey, in their personal life. And like in any platform, whenever Mr. Narayan Murthy he is giving any speech, he speaks so he has so high regards for his wife. And so is the same case with Mrs. Sudha Murthy. So marriages, they are the perfect Yes, we have example. seen a few videos. Yes, this is a perfect example how marriages should be. No ego, understanding each other, living a very simple, humble life. So yes, There were a few videos, Mem was talking about Sir, how they have actually they have continued their life after their marriage, when the Infosys was actually when the laying stone of Infosys was just kept by Mr. Murthy. So she was telling the way she supported him. So that was necessary, support, Yes, respect. I respect. think so. If all these things are there, any marriages can work, as Yes. you were saying to me. Yes. Yeah. Please continue. Yes, because what happens, like what I feel when I talk to my friends or in a group of circle when we speak, we get to know that in love marriages तो हम लोग एक दूसरे को बंदे को जानते हैं तो शादी करना बहुत इजी हो आसान जाता होता है, है। आसान होता है। अरेंज मैरिज में नहीं जानते, बट आजकल जो सोसाइटी का नियम है, अगर अरेंज मैरिज भी होता है ना तो टाइम दिया जाता है, लाइक टाइम दिया जाता है। सो इन दैट टाइम ऑल्सो यू कैन नो ईच अदर। हाँ, आई विल नॉट टेल 100% दैट दिस विल वर्क, बिकॉज हम लोग देखते हैं कि आफ्टर बोथ इन लव एंड मैरिज, इन अरेंज मैरिज देयर आर एक्सेप्शनल केसेस व्हेन थिंग्स टर्न आउट इन अ वेरी बैड वे। डाउरी केसेस है बहुत सारे, इवन नॉट डाउरी, मेनी केसेस आर देयर। सो दिस आई एम नॉट गोइंग टू दैट पॉइंट, आई एम जस्ट टॉकिंग इन जनरल। सो आजकल लव मैरिज या फिर अरेंज मैरिज इतने रिजिड नहीं है। Now even in an arranged marriage, a guy can meet the girl and vice versa. They can talk, if they like, then only their parents say ठीक है अभी दोनों को पसंद आ गया तो हम लोगों को शादी करा देते हैं। सो टाइम तो है हमारे पास, ऐसा नहीं कि लव मैरिज में ही आप बंदे को जानते हो, अरेंज मैरिज में नहीं जानते हो, ऐसा नहीं है। सो इट ऑलवेज आई थिंक डिपेंड्स ऑन टू पर्सन, हाउ दे कम्युनिकेट एंड हाउ दे बिहेव विद ईच अदर, हाउ दे कनेक्ट विद ईच अदर, देयर थॉट प्रोसेस, सब कुछ मिलकर ये जो मैरिज है ना बनता है सक्सेसफुल। Yes, true. Fine. Continuing with that, with this particular question, I just like to ask another point. Is like, जब दो लोग शादी करते हैं, what do you think? What are the points that they should discuss, either in love or in arrange, that two person should discuss before just getting married? What do you think?
Yes, because there are certain points that needs to be discussed and made clear in the very beginning. जैसे कि expenses. शादी के बाद ऐसा भी मतलब हम लोगों को ऐसा भी मतलब सुनने में आता है gold digger. Okay, I just don't want to go to that point. So expenses इसलिए बात करनी चाहिए. कभी-कभी लड़कियों को बहुत expectations रहता है from the guy that she is going to get married and she thinks that मैं ये खरीदूंगी, मैं वो कर लूंगी, ये कर लूंगी, मेरे husband सब उसका like I'll be using his credit card and I'll be doing this and that. तो ये कहीं ना कहीं गलत है because that person is working hard to earn that money. सो मतलब बिफोर मैरिज दिस शुड बी क्लियर एक्सपेंसेस. कैसे एक्सपेंसेस को हम लोग एक दूसरे में लाइक बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज हाउ आर वी गोइंग टू रन आवर फैमिली इस बारे में डिस्कस हो जाने चाहिए. अगर एक लड़की मैरिड है okay, if she is married, if she is independent, if she is a working lady and even her husband or would be is also a working person, so they should discuss कि हाँ शादी हम दोनों कर रहे हैं, हम लोग दोनों एक साथ रहेंगे, तो doesn't mean that only the guy will be सारे एक्सपेंसेस वो लड़का करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए. बोथ द गर्ल एंड द बॉय दोनों मिलके एक्सपेंस करके करते हैं ना, तो वो एक अच्छा लगता है, मतलब इट फील्स गुड. ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑल द बर्डन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी ऑन द शोल्डर ऑफ द गाय. इट शुड नॉट बी लाइक दैट. दोनों लड़का इवन लड़की दोनों मिलकर अपने संसार जो होते हैं ना अपनी फैमिली को चलाना चाहिए. ये फर्स्ट एक्सपेंसेस के बारे में बात करनी ही चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट आई लाइक व्हाट आई थिंक इज they should respect each other's family. Okay, each other's family respect their In-laws. in-laws. Both the guy and the girl, both of them should respect each other's family. Then career goals. Abhi whatever when they marry or when they are about to marry or when they meet, शायद तब उनका एज कम हो या फिर 25, 30, 35 ऐसे में हो, उनको कुछ they might have some dream. The girl or the boy might have a dream और उसके लिए शायद वो work hard कर रहा है कि वो 3 साल बाद में जॉब छोड़ देगा. He will be trying on his own. He will become an entrepreneur. The girl may want to become a freelancer, something like that. अगर ऐसा कुछ career goal है, what they are thinking, like each one of them is thinking, then they should make it clear with their partner or would be partner so that शादी के बाद ये इशू नहीं आना चाहिए कि मुझे तो ऐसा करना था, आपने मुझे करने नहीं दिया. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, डिस्कस हो जानी चाहिए. देन व्हाट आई थिंक इज फैमिली प्लानिंग के बारे में भी उनको बात कर लेनी चाहिए ताकि वो क्लियर आइडिया रहे, ठीक है ऐसा हम लोग करेंगे. तो दिस आर सर्टेन पॉइंट्स, अ फ्यू पॉइंट्स आई थिंक दैट फॉर मी दिस पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस नीड्स टू बी डिस्कस्ड बिफोर गेटिंग मैरिड. Okay, like career, expenses, family planning, and respecting in-laws. Yes. These 4 points you were saying, Yes. like these points should be discussed before Yes. entering into A marriage and marriage. Yes. Yes. Okay. So fine. The next point, the next question that I do have in my mind is like. बहुत सारे शादियां हो रही हैं, लव मैरिज हो रहा है, अरेंज मैरिज हो रहा है, तो फिर ऐसे हम लोग को देखने को मिलता है कि मैनी ऑफ द मैरिजेस आर लाइक नॉट गेटिंग वेल. एक्चुअली आई मीन टू से शादियां टिक नहीं पा रहा है. इन बिटवीन कहीं पे वो बिखर जा रहा है, मतलब लड़का अपने तरफ जा रहा है, लड़की अपने तरफ जा रही है. सो लाइक व्हाट डू यू थिंक व्हाई इट इज हैपनिंग, व्हाई मैरिजेस आर नॉट कंटिन्यूइंग, लाइक व्हाई देयर आर ब्रेकअप्स इन मैरिजेस. ओके, सो जैसा हम लोगों ने 4 पॉइंट डिस्कस किया, अगर उसी पॉइंट्स को हम थोड़ा लाइक दो पॉइंट्स को अगर हम लोग थोड़ा डीप जाएंगे ना, हमारे आंसर उसी में है. जैसे मैं अभी एग्जांपल्स देके आपके साथ बात करने वाली हूँ. जैसे आई नॉट टेल माय फ्रेंड, आई नो दैट पर्सन. She मतलब you know a case. Yeah, I know a case. So in that case what happened, the girl is working in a nationalized bank. Okay, and the boy, he is also working in a central government, he's also central government official employee. Okay. Yeah. Okay, so the girl she is not the only daughter, she has a younger sister also, and the boy was the only son. Okay, and he has his mother. So they liked each other, they got married. Love marriage. Yeah, it was a love marriage, they liked each other, they got married. So so basically after marriage, how many people she has in her family? Her husband and her mother-in-law. Okay. Now what happens is she comes from her office at 5 or 6 in the evening, and then she goes to her room, lock her room and be there all the time. She expects her mother-in-law to do everything. Okay, and she'll just come out to have food and then she will sleep because she is very tired. This is her. It was her saying. Okay, so it was her words. Now, yeah, I know when I will tell this, many people will be against me. Yeah, why she should go to home and work? Yes, why she should go to home and work? Yes, that is correct. I accept. Now it could have been done in these 2 ways. One, they could have employed someone as a cook in their home. Okay, because both husband and wife, they are working, so they could have employed one cook. Okay, and when she comes back from her office, she could take rest for some time in her room, and then she can come and talk to her mother-in-law also. Day in and day out, she just remain in her room. Okay, and even on the even when there are holidays, she doesn't come out throughout the day. Only she will come out to have food. So that home does not feel like her home. It is like a hotel
She's coming, eating, and getting to her room. So in that case, the family will not work. So when her husband protested this, why don't you communicate with my mother? Why don't you why don't you try to have a good relation with her? Then her saying was that I'm very tired, when her husband started asking these questions after marriage, then at one point of time she became so frustrated that she told her husband that I will not stay with your mother. I and you will stay. Now you just see only 3% in the family, and then she wants to stay separate with her husband. So that time her husband said, I cannot leave my mother because my mother is alone. I cannot leave my mother. Now we can sort it out in a different way because her husband also, I know. So he gave her the options that let us solve it in a different way. But she remained very adamant that I and you will stay. Then is our marriage going to work? Otherwise our marriage will not work. These points are like, yes, and then she went back to her parents' house. She stayed there for around one and a half year, and then they got divorced. Okay, so I don't want to bring this. Even her parents, not her mother, but her father knew that his daughter was at fault because I spoke to uncle and I knew, and he told that my daughter is at fault, not my son-in-law. That means somewhere the girls are not brought up with, sometimes, not all girls, but sometimes girls, I don't know, maybe when she grew up, she did not understand the meaning of family. When you are getting married, your husband's family is yours, and your family is your husband's family. Yes, so true. You should respect each other and stay in a you should have a cordial relationship. She is a working lady working in a nationalized bank, and then she is giving all this argument which makes no sense. No sense. I'll give another example of a very good friend of mine. No, hers is also. Those are like live examples. Live examples. My friend, I'll not say that hers was completely an arranged marriage or completely a love marriage. They got married. She married someone whom she knew. Okay, so after marriage things were good, and then what happened when she gave birth to a son? She has a child, and then what happened? And then she started poking her husband that I don't want to stay here. I want to stay separate. So I don't know what happened. Her husband accepted it. Now she stays with her husband and her son separately, and her mother-in-law and her father-in-law, they stay in their original home, and they are staying in another home. There is another example of this example what I'm giving. This example does not stop here in my friend, my person I know. Everyone in your neighborhood, if you check, आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा, क्योंकि ऐसा ही issues आ रहे हैं. Issues क्यों हो रहे हैं ना? क्यों marriages ठीक नहीं रहे ना? This is the problem. I don't know. I am also a girl, but I see that लड़के लोग फेमिनिज्म के नेम पे ना बहुत मिसयूज कर रहे हैं, क्योंकि ना उन लोगों को लगता है कि हम लोग क्यों काम करें, हम लोग काम नहीं करेंगे शादी के ऑफिस से आने के बाद. Of course, you have come from office, you don't need to work. तो इसके लिए आपको आपके हस्बैंड के साथ जाके सेपरेटली रहना ये सोल्यूशन नहीं है. सोल्यूशन इसका क्या हो सकता है? You can employ someone as a cook, or you can ask your husband, please come and help me. Yes, you need to talk, you need to discuss. You need to communicate. Or even I don't think your mother-in-law or your father-in-law will be so bad that they will not understand. They understand. You have to communicate, but you will not communicate because you have this thought. Somewhere, a girl's mother is responsible for that. I'll come to a point here because I know someone. She told me, an aunt, okay, she told me that she will give marriage of her daughter to a guy who doesn't stay with his parents. Suppose he's working in a very far away place, then only she will give marriage of her daughter to that guy. Why? ऐसा क्यों करना है ना? उनको लगता है कि ना सास बहुत खराब है. So this cannot be done because वो क्या कर रही है? वो अपनी बेटी के she is giving wrong teachings to her daughter. Maybe before knowing her mother-in-law, she is having a perception about her mother-in-law which may be wrong. मतलब ये सब चीजें अगर टैकल कर दिया जाए तो शायद जितने भी देखा जा रहा है कि डिवोर्स रेट से इसमें और एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी इश्यूज होते हैं ना हस्बैंड वाइफ में, वो इश्यूज ना उन लोगों को सॉल्व करना चाहिए. वो क्या करते हैं ना, वाइफ अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करती है और हस्बैंड अपने फैमिली को इन्वॉल्व करता है. फिर क्या होता है, पूरा फैमिली आते हैं. फिर क्या होता है ना, बहुत हस्बैंड वाइफ की चीजें सॉल्यूशन तो होता नहीं है, वो मतलब और बिगड़ जाता है. तो ऐसे पॉइंट तक जाना ही नहीं है ना. मतलब कोई इश्यूज है तो उसको सॉल्व आउट कर लो. फिर नहीं, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऐसे इश्यूज हो रहे हैं कि दो बंदे में प्रॉब्लम है. अगर दो बंदे में प्रॉब्लम है, लेट नॉट एनी ऑफ द फैमिलीज गेट इन्वॉल्व इनटू ऑल दिस. लेट द टू पीपल सिट टुगेदर, डिस्कस, कम्युनिकेट एंड सॉल्व द इशू व्हाटएवर इट इज. तो मतलब अगर ऐसा हर लोग सोचने लगे प्रोबेबली तो जाके सॉल्यूशन हो सकता है. इतना जो डिवोर्स रेट्स हम लोग देख रहे हैं या तो मनमुटाव जो हम लोग देख रहे हैं, शायद उतना हाई लेवल तक ना जाए. हाँ, तो क्योंकि ना सर एक पॉइंट यहाँ पर और है ना कि कम्युनिकेशन सबसे
मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कम्युनिकेशन, और वो तो मिस आउट हो ही रहा है हस्बैंड वाइफ में। मतलब ऐसा दिखने में आता है ना कि एक के घर में दोनों रहते हैं, बट वो एक दूसरे को टैग करते हैं, मतलब सोशल नहीं, मीडिया में, हाँ, और कुछ कुछ मतलब टैग लाइंस या फिर वीडियोस में, है ना। मुझे लगता है क्या जरूरी है, अगर कुछ इश्यूज है अपने हस्बैंड के साथ डिस्कस कर लो, सोशल मीडिया में क्यों अपने रिलेशनशिप मतलब को ओपन करना। ऐसे भी शायद एक आध दो केसेस कभी तो मेरे मतलब मुझे सुनने में आया था। शेयर वन पॉइंट जहाँ पे मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया था कि हस्बैंड और वाइफ में दोनों में तालमेल इसलिए नहीं बैठ रहा है कि मान लो हस्बैंड नाइट शिफ्ट कर रहा है, वाइफ डे शिफ्ट कर रही है, तो जब तक हस्बैंड घर पे जाता है तब तक वाइफ निकल जाती है, हाँ। और जब तक वाइफ लॉग आउट करके घर पहुंचती है तब तक हस्बैंड निकल जाता है लॉग इन करने के लिए। Correct. तो ऐसे भी शायद इश्यूज है सोसाइटी वही में। कैरियर जो बात है ना, कैरियर हाँ। गोल्स या फिर कैरियर जो रिलेटेड इश्यूज है ना, वो भी है। ये दिस जो आपने जो पॉइंट बताया ना, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ। हस्बैंड वाइफ मतलब क्या, एक दूसरे के साथ उनको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। हाँ। व्हाटएवर भी, जॉब में थोड़ा पैसा कम मिल जाए, अगर आप डे शिफ्ट में आ जाओ या फिर दोनों नाइट शिफ्ट में चले जाओ, मतलब समवेयर यू हैव टू एडजस्ट दिस। अभी इसको अगर लोग बोलने लगे कि हम कंप्रोमाइज करें शादी में, हम नहीं करेंगे, तब तो ये पूरा गलत जा रहा है। ये तुम्हारा लाइफ है, इट्स योर लाइफ, सर्टेन वेयर एडजस्टमेंट इज गुड फॉर यू, यू हैव टू डू इट। दिस इज एज सिंपल एज दैट। आपको हर जगह पर क्वेश्चन करने से आपका लाइफ डिफिकल्ट होगा, वो लाइफ इजी नहीं बनेगा। तो जहाँ पे आप देख रहे हो कि टाइमिंग्स का इशू है हस्बैंड एंड वाइफ में, तो ये आइदर आप यू सर्च फॉर अनदर जॉब, या फिर आप दोनों बैठ के बात करो कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते, क्या जा सके। तो इश्यूज ऐसे बहुत है। तो अभी गर्ल्स आर इंडिपेंडेंट, तो गर्ल्स जैसे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना, पता नहीं, मतलब इट्स वेरी गुड, आई एम ऑल्सो इंडिपेंडेंट वुमन, बट उसके साथ ना जो शादी है ना, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप शादी करके ना अपने आप को 20 ईयर गर्ल नहीं समझ सकते हो। आप शादी कर चुके हो, यू हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी इट अ बॉय बी इट अ गर्ल, आपको वो निभाना ही पड़ेगा फॉर योर लाइफ। ये जो पॉइंट्स मैंने डिस्कस किया, दिस आर सर्टेन डिवोर्स दैट कैन बी एक्चुअली स्टॉप, उसके बारे में डिस्कस कर रही हूँ अभी। हाँ, देयर आर सर्टेन केसेस जो हम लोग को पता चलता है, डाउरी केसेस हो या फिर फिजिकल अब्यूज के केसेस हो, ये सब तो एक्सेप्शन केसेस है, दैट आई एम नॉट कंसिडरिंग। ओके, वी आर कंसिडरिंग ओनली दोज मैरिजेस दैट एक्चुअली डिवोर्स होता है बिकॉज मतलब हस्बैंड और वाइफ की गलती की वजह से। वो गलती को बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटी छोटी बातों से मतलब इट बिकम्स बिग माउंटेन। तो वो उस बारे में हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग वी आर नॉट गोइंग टू द एक्सेप्शन केसेस वेयर डिवोर्स इज द ओनली सोल्यूशन, उसमें मैं नहीं चाह रही हूँ। हाँ, अभी जैसा अगर हम लोग बात कर रहे हैं मैरिजेस क्यों नहीं टिक रहा है, बिकॉज समटाइम्स ना पीपल गेट मैरिड, मतलब किसी लड़के से मिला बहुत अच्छा लगा, या किसी लड़के से मिला बहुत अच्छा लगा, जल्दी शादी कर लिया, मतलब दे गॉट मैरिड वेरी क्विकली, मतलब उनको एक दूसरे को जानने का शायद इतना टाइम ही नहीं मिला। शादी के बाद दे गॉट टू नो दैट उन लोग तो एक दूसरे के लिए कंपेटेबल ही नहीं है, बहुत इश्यूज है। तो वैसा भी शादियां हैं जो बहुत जल्दी उनमें डिवोर्स हो रहे हैं। So you need to give time. Marriage is a very big decision in your life. You need to give time and then get married. ऐसा नहीं है कि किसी ने 24 में शादी कर लिया या 26 में शादी कर लिया तो मेरा अभी तक 30 हो गया, मैंने शादी नहीं किया, ऐसा कुछ नहीं है। वेट फॉर द राइट पर्सन, इफ यू गेट गो अहेड विद द मैरिज, अदरवाइज योर लाइफ इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। Right person, right time. Right person, wait for the right person and right time. Okay. So, ma'am, what do you think? What are the points that should be considered to make a marriage successful? Just a few of some conclusion points. Communication, there should be no communication gap. Okay. Whatever is there, you should communicate it directly to your partner, and then you should respect. And yes, whatever responsibility as a married person, both of you, any person, both of them need to do it together. Okay. So that it becomes like easier, and then there is no issue. Okay. So a girl need not do 100%. Both of them, let them do 50%. Okay. Support each other in at least household work if both of them are working. Okay. So this is something I feel. These are the basic points. Basic points. Yes. Okay, ma'am. Thanks a lot. So fine. We are going to end the video. So in coming time, we will be coming up with few other topics, social topics, as well as some knowledgeable topics. So thank you. We are going to meet again. Follow us.